ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ। ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਕੱਲ ਫੋਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ। Extortion-focused B.C. Safety Forum draws concerned residents, politicians. We have a public safety crisis in Surrey, says Mayor Brenda Locke. Plenty of dads spent their Father's Day at a public safety forum in Surrey at a banquet hall that was allegedly previously targeted in a shooting. Concerned South Asian businesses owners, local residents and municipal, provincial and federal representatives gathered for the forum, which followed a recent surge in reported extortion threats against the community. Satish Kumar, a Surrey businessman who helped organize the forum, said he hoped to gather the community together to help find some solutions to the ongoing extortion threats. Kumar himself said two businesses he has current and former links with were recently shot at. In connection with extortion-related phone calls he has been receiving over the past few months, Kumar showed the gathered crowd images of the messages he said he had received from the alleged extortionists. "You are not replying, right? You are going to die. You are next. You will be killed." Part of one message said, another tells him he owes $2 million and that it is his final warning. "You have until tomorrow to respond. If you don't, then get ready to die." Several politicians then spoke over the next 2 hours, including Minister of Public Safety and Solicitor General of BC, Gary Bagg. Local MPs and MLAs, including Sukh Taliwal, and leaders of the provincial opposition, Joan Rusted, Surrey Mayor Brenda Locke, Surrey Police Service Chief Constable Norm Lipinski, and Wendy Mahat, Chief Superintendent of the BC RCMP's Provincial Operations Support Team in Surrey. What is happening in Surrey is frightening, and no one should feel unsafe in their community, in their business, or in their homes, Bagg told the crowd. Organized crime is very complex. I want you to know that this is a multi-jurisdictional issue that is not happening only here in Surrey or in Abbotsford, but all across the country. Our government is standing with you. At the provincial level, we continue to take action to ensure British Columbians are safe from organized crime. More than $100 million is invested annually to support specialized enforcement and intelligence programs targeting guns, gangs, and illicit activities. At the national level, the federal RCMP established a national coordination and support team to work with police in BC and other jurisdictions. He continued, before urging those affected to report any extortion-related threats to police. "I cannot stress enough the importance of reporting any threats or attempts of extortion to the police immediately. This information is crucial," said Bagg. Locke noted it's the fourth such meeting held about the issue of extortion. "I know people are frightened. The city is meeting regularly with affected people," she said, "but unfortunately not everyone is reporting these incidents. And we all have to ask ourselves why." Locke then focused on policing in Surrey. "This is very specifically a direct message to the province, and it is a direct message to the Premier and to you, Minister Bagg. Policing Surrey is at risk today. It is not an experiment in Surrey," Locke said. "I must tell you, and you must understand, that we are not getting the kind of service and attention that we need in order to keep our citizens safe, not just from Surrey Police Service and not just from E Division RCMP, but the entire nation. What happens right now in Surrey falls squarely on the province's shoulders. How it is fixed, and make no mistake, it must be fixed, falls squarely on the provincial government. Right now, public safety in Surrey is fragile. We have a public safety crisis in Surrey." Locke also urged those gathered to report threats. "If you know something, say something," she said. Locke said she intends to write to the Prime Minister Mark Carney with 4 requests.
a real-time intelligence fusion, a single national dashboard that flags extortion incidents within hours, not weeks, special operations funding and expanded RCMP in Surrey, plus emergency federal grants for municipal police until arrests are made. Victim supports guarantees, 24-hour protection details, and financial loss compensation for families who come forward, and a joint provincial federal task force to audit the impact of Surrey police transition on organized crime activity with the authority to redirect resources on the spot. Surrey is going through the largest police transition in North America's history. The province of British Columbia must do its part to remove any bureaucratic failures and to expedite this transition and to ensure our residents are protected every step of the way, Locke said. Lipinski noted that while SPS is the police agency of jurisdiction in the city, as we all know, the transition is not complete, and so the RCMP Surrey Provincial Operations Support Unit continues to work very closely with us. And I continue to speak to Chief Superintendent Mehet on a weekly basis about this issue. The issue of individuals being extorted for money with threats of violence has been on the rise over the past 18 months in a number of communities in Canada, Lipinski continued. In Surrey, over the past 6 months, there have been 10 reports of extortion. I also recognize there are more incidents that go unreported. It is my hope that through today's forum, we can encourage more individuals to report these crimes and that as a community together, we can show strength. Lipinski couldn't confirm whether reports on social media of individuals or groups taking responsibility for the extortion-related crimes were factual. We live in a society where there is a free speech under the Constitution. We all seen on social media on a variety of topics, he told the crowd. Know that police monitor and look at after there is an incident on social media to see if there are any investigative leads. We are very much on it and watching that. Kumar said the June 11 shooting death of Abbotsford resident Satwinder Sharma in broad daylight in Surrey was also extortion related, something police have not confirmed, although they said it appears to be a targeted incident. Mr. Sharma was at his place of work at the time of the shooting and he had no criminal history, said Integrated Homicide Investigation Team spokeswoman Sergeant Freda Fong. सरी विखे फोरम है जिहड़ा आयोजित किया गया और उसका जो मुद्दा सी वो सी एक्सटॉर्शन दा और इस दे विच जिहड़ियां फरौतियां दा मुद्दे दे प्रभावित जिहड़े लोक ने वो आप और इस दे नाल नाल तिन्ने लैवल दियां सरकारां दे रिप्रैजेंटेटिव विरोधी तरह ते इन पावर गवर्नमेंट दे नाल नाल पुलिस दे रिप्रैजेंटेटिव उत्थे रहे जिस दे विच गल्लां कई सारियां खुल के सामने आईयां और ये भी दस्सिया गया कि किस प्रकार फरौती दी मंशा है लोकां नूं जिहड़ा तंग परेशान किवें कीता जांदा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਸੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰੀ ਜਾਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ बल्कि पूरे कैनेडा भर दे विच फिरौतियां ते एक्सटॉर्शन दी मंशा हित लोकां नूं परेशान किया जा रहा है जिस दे विच खुले पैसे जिहड़े ने मंगे जा रहे ने ना देण दी सूरत दे विच तुहानूं मारन दी जिहड़ियां धमकियां ने वो दित्तियां जा रहीआं ने। मिस्टर शर्मा ने वो अपनी जिहड़ी गलबात आ टैक्स दे राहीं वो भी जनतक कीती लोकां नूं दिखाई और इत्थे मिनिस्टर पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर तो शहर दी मेयर ब्रेंडा लॉक ने मंग भी की कि ये समा जो है इस वक्त सरी जो है सरी दे विच जनतक सुरक्षा दा काम जो है पूरी तरह क्राइसिस दे विचों गुजर रहा है और इस वक्त सूबा सरकार ते फैडरल सरकार नूं मिल के इस जिहड़ी कारगुजारी है इस दे विच लोकां नूं जनतक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए है।
वैसे दीदी आपको पता है कि हमारे शहर के मेयर ने कहा कि सरी इस वक्त क्राइसिस में है। बिल्कुल, एक्सटॉर्शन केसेस को अगर हम देखते हैं तो वी आर एट पब्लिक सेफ्टी क्राइसिस राइट नाउ। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या इसका जो वजह है वो पुलिस ट्रांजिशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आरसीएमपी जब थे तब भी ये एक्सटॉर्शन केसेस सामने आते थे और उस वक्त भी कोई भी केसेस जो है वो सॉल्व नहीं हुए थे। एक्सटॉर्शन केसेस आज का नहीं है, इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल। और इस वक्त जो क्राइसिस है वो हमें ओवरऑल पूरे कनाडा में हम सुन रहे हैं कि गैंग्स ये कर रहे हैं, और ज़्यादा करके जो एक्सटॉर्शन केसेस है वो इंडियंस पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, विच इज़ अ बिग बिट ऑफ कंसर्न हियर। और जब हम इन गैंग्स के बारे में सुनते हैं, आज सुबह भी 18 लोग जो चार्जेस जिनको लगे हैं एक्सटॉर्शन पर, और उसके साथ और भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के चार्जेस लगे हुए हैं, उनमें से 18 में से 16 जो थे वो इंडो कैनेडियंस थे। बिल्कुल। और इस तरह की बातें जब खुलकर सामने आते हैं तो हमारी जो इंडो कैनेडियन कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी है यहाँ के, वो सारे काफ़ी परेशान है इस बात से। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव टू रियली थिंक अबाउट। ये सरी पुलिस ट्रांजिशन या ये हो गया वो हो गया, ये सारी बातें छोड़कर अलग रख कर हमारे जो लीडर्स हैं इनको इन बातों को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। सबसे पहले ये सारे जो इमिग्रेशन मसले हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हमेशा ये देखते हैं कि जहाँ पर वो अपने रोटी सेक सकें, सो आकर ये सारी बातें करना इट डज नॉट मेक सेंस, और ये सारी बातें इज नॉट व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग एट। एक्सटॉर्शन केसेस बढ़े जा रहे हैं। वी हैव गॉट 10 केसेस इन सरी, ये कंफर्म किया है हमारे पुलिस अथॉरिटीज़ ने। और इन केसेस को किस तरह से काबू करना, हमेशा आप लोग पुलिस सिस्टम को बदनाम नहीं कर सकते। पुलिस कभी कभी कोई भी जो खास इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक को नहीं रिलीज कर सकते। देयर इज ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन एंड दे आर प्रोबेबली वर्किंग ऑन इट, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दे आर गोइंग टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट। और जो भी ये गैंग्स है, चाहे वो गैंग्स इस मुल्क में है चाहे वो गैंग्स दूसरे मुल्क में है, वो ज़रूर पकड़े जाएंगे। एक और बात दीदी जो पुलिस ने कहा है, ख़ासतौर से चीफ लिपिंस्की ने ये बात कही है कि ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है, आर दे फैक्चुअल? कितनी सच्चाई है इसमें? कभी कोई किसी हादसे का जो ब्लेम है अपने ऊपर ले लेते हैं, कोई कभी ले लेते हैं, तो इज दैट फैक्चुअल? कैन वी एक्चुअली रिलाई ऑन दीज थिंग्स? ये सारी बातें खुलकर सामने आएंगे 1-2 दिन में, और विल मेक श्योर कि एक्सटॉर्शन जो केसेस है, प्लीज गो एंड रिपोर्ट। इन बातों को ज़रूर समझो कि पुलिस के पास एक एक जानकारी जाएगी, तब ही दे कैन वर्क ऑन दिस एंड दे कैन सॉल्व दिस इशू। सो प्लीज़ अपने अपने रिपोर्ट्स पुलिस अथॉरिटी को ज़रूर दो, ज़रूर उन्हें बताओ। अगर शायद आप सोचते होंगे नहीं ये एक्सटॉर्शन नहीं है, बट हाँ धमकी लग रहा है, लेकिन नहीं, यू हैव टू रिपोर्ट दैट टू द पुलिस। लेट द पुलिस फाइंड आउट कि ये धमकी है, एक्सटॉर्शन है, या आपको डराया धमकाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। लेट द पुलिस मेक दैट डिसीजन। तो ये सारी बातें हम आगे प्रोग्राम्स में ज़रूर लेकर आएंगे। जितने भी लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्सटॉर्शन पर ख़ास प्रोग्राम्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। रिफ्लेक्शंस बैंक्वेट हॉल में कल जो फोरम हुआ, बिजनेसमैन रिफ्लेक्शन बैंक्वेट हॉल के ऑनर सतीश कुमार ने ये फोरम अरेंज किया, एंड थिंग्स आर गोइंग ग्रेट। वी विल बी वेरी सून very close to find out who's all behind this, which gang is it, what is happening in Surrey BC। इसके साथ इजाज़त दीजिए, goodbye। कुछ भी ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ, ਯਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।